तो न्यू टॉपिक क्या है? FBD. FBD, व्हाट इज फुल फॉर्म? फ्री FBD, बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, इसी के में वेटिंग है ना पीपल. इसमें फ्री बॉडी डायग्राम आ गया तो टोटल चैप्टर भी आ जाएगा पूरा, और टोटल फ्री बॉडी डायग्राम आने का. राइट, चलो. फ्री बॉडी के डायग्राम के लिए आपको सर्टेन रूल्स आर देयर दैट वी आर ट्राइंग टू फॉलो. सो व्हाट इज द फर्स्ट रूल? सेज बॉडी शुड बी शोन इन पॉइंट मासेस. कभी भी बॉडी शुड बी शोन इन पॉइंट मासेस. मतलब अगर बेंज कार है तो बेंज कार का वी शुड नॉट ड्रॉ, वी शुड पुट ए पॉइंट मास. ओके, एंड नेक्स्ट, show all forces acting on it वाला. We have to show all the forces acting on it वाला, not by it. उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, that forces only we should show in free body diagram. And when you're drawing the free body diagram, choose axis and resolve the forces along them. Like sometimes आपको x axis y axis choose करके आपको along x axis along y axis we have to draw the free body diagram. We have to resolve the components and then we have to draw the free body diagram. Okay, copy down. So we have to show all by point masses, all forces acting on it, and some complicated way whenever axis is resolve करके then only you have to show the forces acting on. चलो, no, copy down Krishna. Okay, चलो. Now draw the free body diagram of the block का, एक एक मास का, इसका एंड सिलेंडर, इसका सिलेंडर दोनों ग्रूव्स के अंदर है. और ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. सो व्हाट इज द फ्री बॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. नो, पूरा फोर्सेस डालो. व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन? टेल में. इसका मास है m है, सो डाउनवर्ड्स इज mg. एंड देखो सरफेस इज एक्सर्टिंग ए नॉर्मल एक्शन ऑन द ब्लॉक m, नॉर्मल एक्शन. एंड एट द सेम इंस्टेंट में the mass m block is also exerting a normal action on the surface. Right, this is the total forces acting on this diagram. Right, now इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है किसका? मास का. वी टेक मासेस m का कोई भी शेप होने तो पॉइंट मास ले लेंगे. पॉइंट मास ले लेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया. उसका मास कितना है? मास m है. ना इसके ऊपर व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट वाला चाहिए. कौन सा फोर्स एक्टिंग ऑन इट? वन इज mg इज एक्टिंग ऑन इट, एंड टॉप में नॉर्मल एक्शन इज एक्टिंग ऑन इट. खत्म. ये दिस ends we should not take. Why? This is not acting on it, it is acting on the surface. That's why we are not taking into account. Okay, so very important, whenever you are drawing the free body diagram, first किसका ड्रॉ कर रहे हैं उसका पॉइंट मस्त डाल दो. उसके ऊपर जो जो फोर्स एक्टिंग ऑन इट वी हैव टू ड्रॉ. सपोज यू हैव मल्टीपल फोर्सेस, आपको बाजू में ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, ऊपर ऐसा मल्टीपल फोर्सेस यू हैव टू ड्रॉ. ओके, चलो नाउ इसका ड्रॉ करो. सिलेंडर ऑफ, where's the cylinder in this? देखो ए फ्रंट व्यू ऑफ द सिलेंडर. Oh, ऐसा. सो सिलेंडर के ही ड्रॉ करने को डर करके मुझे दिखाओ. डन ना. सो पहले इसका फोर्सेस ड्रॉ करो. mg फोर्सेस. देखो दोनों कांटेक्ट है. व्हेनेवर देयर इज अ कांटेक्ट, नॉर्मल एक्शन, एंड आल्सो नॉर्मल एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर. n1 एंड इधर से n2. व्हाट आर फोर्स एक्टिंग ऑन इट वाला? ये तीन ही फोर्स है ना. सो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? पॉइंट मास n1 n2 एंड mg. दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम. इसका मास है m. If multiple forces are acting, you have to draw like this. इधर बाजू में ड्रॉ करने का. If multiple axis forces are acting, here only one force. That's why mg only I'm putting. आया? चलो, no.
ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मास m. ब्लॉक का चाहिए, देखो मास m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. इधर इधर रोप्स अटैच्ड. No need of resolving, just show me the forces acting on it. Sir, won't it just be MJ acting downwards and N1 and upwards, and then another N on the. देखो m का I'm putting point mass. What are the forces? mg downwards. इस तरफ वाला कितना आएगा, इस तरफ वाला कितना आएगा. This is T1, this is T2. I told you string change, tension change, Rotational. right? String change, tension change. So that's why this is angle theta. If you want to put, okay, understood? Sir, why is it normal acting? ये हवा में है ना, it is not in the two surface के बीच में नहीं है, just block. That's why normal action not there. If it is on the ground, normal action add करना है. Okay. चलो next one. Understood Krishna? वाला. Next. हाँ. Now इसका free body diagram for block A, block B ड्रॉ करो. Block A and block B का free body diagram ड्रॉ करो. And we'll see. पहले ड्रॉ करो M1 M2. So पहले what are the forces acting on it here? M1G. Here tension T1. देखो ये पुली का सेम स्ट्रिंग है, सो ये पुली के रेस्पेक्ट में टेंशन T1, सेम स्ट्रिंग है, टेंशन T1 पुली के रेस्पेक्ट में, राइट. एंड हियर मास के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डाउनवर्ड्स इज M2G. इधर क्या आएगा, व्हाट विल गेट, ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, इधर टाइड इज डिफरेंट स्ट्रिंग है, सो हियर T2. समझ आ रहा है, डिफरेंट स्ट्रिंग है, टेंशन चेंज कर दिया. नाउ Why is tension always acting upwards? see tension I told right on that day, tension is always away from the point. इस मास के रेस्पेक्ट में it should be away. रस्सी को मैं ऐसा खींच रहा हूँ, the tension is acting like this, away from the point only. The rope के ऊपर tension is acting away. Okay, so now draw करो M1 का same. M1 का drawing M1G and tension T1. Similarly M2 का ड्रॉ करो बोले तो M2 को downwards is M2G. हाँ. So shouldn't it be 2T1? See, आपको सॉल्व करने समय T2 is nothing but 2T1, बट जनरली फ्री बॉडी डायग्राम करने समय आपको नॉर्मली T1 T2 लगा के सॉल्व करने लगा रहा है. ओके, सो M2 के लिए T2 M2G. अगर इस पुली को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो बोले तो कैसे ड्रॉ करेगा, पुली को ड्रॉ करो बोले तो इज अ पुली राइट P1. हाँ, इसका कैसा रहेगा, ऊपर कैसा रहेगा, आई कैन पुट T4 T2 और T3 लगाओ. हाँ, एंड देखो ऊपर T3, नीचे क्या होगा, देखो टेंशन T1 पुली के रेस्पेक्ट में T1. सो इधर T1 डाल रहा हूं, आई नॉर्मल फोर्स है पीछे T1 लगा रहा हूं. कितना मल्टीपल फोर्सेस आने दो, ट्राई टू पुट बिसाइड ऐसा लगाओ. ओके, so and M, whether it M1G Why will did be you there, draw two T1s? we can add 2T1. Okay, But but why did you draw two separate T1s for P1? देखो इस वायर इस पुली के रेस्पेक्ट में टेंशन इसमें T1 एक्टर है, इधर T1 एक्टर है. So can't So we just पुली directly का act फ्री, as two T1? you can take it as 2T1, no problem.
And first initially understand कर लिया, I'm drawing individually. And one more force is missing. Any force is missing? Yes, sir. P1G. P1G. No. At In the our mass of the portion pulley. में, then massless pulley only. There is no mass. Okay. One question आएगा, but general नहीं आएगा exam में. So massless pulley है. That's why M1G नहीं है. Right? So this is the pulley का respect में वाला. See, if there are Sir, I have multiple a doubt. forces, tell me. So free body diagram of A, will there be only one T1 force or two T1 force? No, 1T1 force only. इसके ऊपर 1T1. Same string में same tension. Only 1T1 force. Okay. So एक समझ में है ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें पुली का रेस्पेक्ट में. चलो. Now with this knowledge we are entering into equilibrium of a particle. Equilibrium of particle. Equilibrium means net force is zero. उसका क्वेश्चंस करने वाला है. Then क्या करने वाला है? After equilibrium होने के बाद when the object start moving, at that time what is the forces कैसे है we will calculate. Okay. चलो. Equilibrium क्या है? The external force acting on a body should be zero. That is called net external force is zero. Then only we can say it is equilibrium, right? दो conditions satisfy होगा. Can you tell me what are the other condition also? Equilibrium means what is the other condition to satisfy? Equilibrium means one is net force is zero. दूसरा condition भी satisfy होने का. कौन सा? Sir, acceleration should be zero. No. Actually, आपको rotational motion में आएगा. That is, external torque acting on a body should be zero. Yeah, याद रखो. We will deal in the system of particles में rotational motion में. Whenever torque rotational wise में torque is zero and net force is zero, then we can say perfectly it is in equilibrium. But in this chapter में torque के बारे में नहीं पढ़ रहे, वो net force के बारे में देख रहे हैं. Okay. देखो. If the system is in equilibrium, we can write the equation as x may equal 0, sigma of x by x is 0, sigma y is 0, sigma z is 0. मतलब sum of the forces, मतलब indirectly what is the meaning of this one means x direction forces means आपको एक body के ऊपर this x direction का force equal बोल के meaning है. मतलब sigma sum of forces means 0 means जो भी force net force act हो रहा है, if you take sign convention, net force is becoming 0. So equilibrium means आपको simply the particle is not moving. Right side force equal left side force, upside force equal downward force, z direction force is equal to positive z direction force equal to negative z direction forces. Okay, that one we have to equate. Equilibrium किया होगा ना स्कूल में, कॉलेज में किया equilibrium? हाँ. Sorry, basically just told that external force should be zero. That's it. हाँ, external force is zero, external torque also zero. आगे आने वाला है. देखो ये चैप्टर अगर आ गए तो वर्क फॉर एनर्जी इज इजी. वर्क एनर्जी दैट वन इज इजी भाई. अगर फोर्स को फाइंड करना आ गए तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो फोर्स उधर भी सेम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सो लिंकिंग चैप्टर है ये, समझ में आए तो वर्क डन आल्सो विल बी सेम. ओके चलो शेड्यूल करेंगे एक एक का. नीटली थोड़ा मैथ्स भी चाहिए बिकॉज आपको एंगल्स ऐसा जल्दी जल्दी नहीं आएगा. आपको थोड़ा मैथ्स लगा के कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा करके एंगल्स फाइंड करने का, देन ओनली यू कैन डू द इक्विलिब्रियम, राइट. चलो ट्राई करेंगे. क्या करो. सपोज ए स्ट्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन द सरफेस, एक सरफेस इधर से ब्लॉक है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है, एंड ऊपर से ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is pulled along on the Can you string go by back for applying. 1 second? Huh? Can you Backward. go back for 1 second? Oh, never mind, sir. Nothing. Okay. Okay. तो एक ब्लॉक है, इट अटैच विद द सरफेस. ऊपर से मैं खींच रहा हूँ स्ट्रिंग 2, एक डिफरेंट स्ट्रिंग है. ओके विद 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ. ही इज टेलिंग फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग 1, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग 2. स्ट्रिंग 1 में कितना है, स्ट्रिंग 2 में कितना है, कैलकुलेट करो. The string 2 will be 10, string 1 will be 0. ओके देखेंगे. व्हाई? So because so downward there's mg, so it'll balance out F10. हाँ स्टेप बाय स्टेप करो. या and- करो. So how do you do that?
Like, how do you write it? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके फोर्सेस ड्रॉ करो, बिकॉज आगे का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में आपको फ्री बॉडी डायग्राम इजी फ्लो होने का. So string 1, string 2, right? This is a mass 1 kg. So what are the forces acting on it? One is downwards, इसके respect में T1 and one is 1g, mg, right? M is 1g, and ऊपर कौन सा है? T2, which is nothing but T2, and force is same, right? 10 newtons, right? Now, since it is equilibrium or not, tell me whether this is equilibrium or not. Equilibrium, right? It's not moving, right? That means upward force equal to downward force. Upward force equal to downward force. That means कौन सा है? T2 is equal to downward force कौन सा है? T1 plus 1g, right? G is 10 ले लो, and T2 is 10. 10 minus 10 is equal to T1. T1 is 0 Newton. And T2 is 10 newtons. This is a string of tension 1, tension 2. समझ रहा है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट करो, मैं करो, सॉल्व करो नीटली, स्टेप बाय स्टेप करके आंसर बोलो, इतना जल्दी जल्दी मत बोलो. A breaking strength of the string connecting wall and block B is 175 newtons. ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 175 न्यूटन्स, मतलब टेंशन ओनली द गिवन, इसका इस रोप का. Find the maximum magnitude of the weight of the block for which system should be stationary. कितना weight लगाऊं, system should be stationary. Block of किसका? A का block चाहिए. System should be stationary. The block B का weight they given as 700 newtons. See again, mg नहीं लेने का, 700 डायरेक्ट लेने का. mg is nothing but 700, right? mg is nothing but 700. Okay. G फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करो, G का 10 ले लो. He is saying to find what? Maximum magnitude of weight of the block A. Weight चाहिए, WA चाहिए. Find करो. तो इस weight चाहिए, WA. So what would you use 700 newtons for? Try करो. 700 newtons is what? Weight of the block B. वो देगा, जो भी दिया सॉल्व करो, नहीं तो कर दो. सो इसके ऊपर व्हाट इस पॉइंट में इफ यू कैलकुलेट द फोर्सेस वी विल सी व्हाट आर द फोर्सेस बोल के. देखो इसके ऊपर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन, वन इज डब्ल्यू ए एंड अदर वन इज टी ए, टेंशन इन ए, राइट? So That they means- said 175 newtons means the tension is 175 for block टेंशन B. इज 175 ऑफ द, इसका टेंशन इस रोप का वॉल एंड द ब्लॉक बी का टेंशन इज T1 मान लो 175 न्यूटन्स. एंड इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस तरफ भी स्ट्रिंग चेंज, राइट? टेंशन को TB मान रहा हूं, एंड दिस आल्सो स्ट्रिंग चेंज्ड, आई कॉल एस T2. डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दिया. ओके, सी आवर इंटेंशन इज टू फाइंड TA, देन दैट इज इक्वल टू वेट, राइट? TA इक्वल टू WA. सो WA फाइंड करने का, सो बाय यूजिंग इक्वेशंस यू हैव टू सॉल्व. ओके, इस पॉइंट में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, समझ में आ जाएगा. इस पॉइंट में व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? वन इज T2. इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में TB इज लाइक दिस, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, सो टेंशन TB, एंड डाउनवर्ड्स उस पॉइंट में डाउनवर्ड्स इज TA, एंड दिस एंगल इज 30 degrees. And TA is equal to what here? From this diagram, this is equilibrium, right? TA equal to WA only. WA, yeah. TA is equal to WA. So TA के जगह में WA लगा रहा हूँ. WA. And here tell me, this body is equilibrium with this side force equal to this side force. TB is how much? TB is also
175. Right? The block is equilibrium means right side force equal to left side force. That's why that is the meaning. Sigma fx is 0 means that only. This side force equal to this side force always. Okay. Now solve. Resolve the components. And this system is in equilibrium. Resolve the components and use the equations and solve. Find W A. So what is the component here? So sir, calculate T2 cos it cos हाँ 30 वही is equal to component 125. निकालो इधर component निकालो. What is the component along this direction? T2 cos 30 and इधर So T2 T2 cos 30 will be equal to 175, right? yes, T2 sin 30. Since the body is equilibrium, upward force equal to downward force, this side force equal to this side force. Equate करो and try to find WA. Always resolve into the x component and y component. Other than components को पूरा resolve करने का ये निकाल देने का then after that. So y direction भी है x direction. Sir, I got T2 as 350 by root 3. T2 मुझे क्या चाहिए WA चाहिए. That is Sir, correct only. 50 root 3. हाँ 350 root 3. 350 root 3. कौन सा T2 हाँ No, WA. WA 350 root 3 yes. 350 root 3 means root 3 by root 3. No wrong. Sir, will it only be 350? कौन सा T2 आने के बाद WA फाइंड करो. Sir, I got T2. Yes, sir. That won't T2 sin 30 be equal to WA? हाँ that is equate करो. Yeah, so T2 sin 30 is देखो T2 sin that is 1 by 2 2. is equal to WA. So one second, one second. हाँ so कितना होगा 175 by root 3 आएगा. तो Yeah, 175 by root 3, yeah. 175 by root 3. देखो कृष्णा equate this side force equal to this side force and we'll get T2. T2 value कितना है आपको? So I did it wrong. I took Okay. So 350 by root 3 will be the T2 value. Now substitute this way. I got the value of 175 by root 3 newtons. Weight is newtons, right? Tension is also newtons. आया? So थोड़ा आराम से आपको we will get in x component y component लगा के x direction में then only solve equilibrium questions. This side force equal this side force, upside force equal upside downward force. जनरली 2 dimension में करने वाला है, right? Okay, चलो. now करो देखते हैं. थोड़ा brain use करना पड़ेगा. A cylinder of weight W is resting on a fixed V groove. देखो cylinder है, front view देख रहे हैं सर. This is the weight. Okay, calculate the normal action between cylinder and two inclined planes. Normal action. What? Normal means the perpendicular thing through the center. Normal action is this only. I saw. Normal action we have to find between the cylinder and the two inclined planes. Like N1 and N2 we have to find. He told only W is acting in the downward direction, right? mg, right? W is nothing but mg only. So they didn't give the value of the Values are not given, just in terms of आएगा. So always draw the free body diagram and solve. तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके कैसा? ये वाला W इधर से N1 फर्स्ट सरफेस से, सेकंड सरफेस से N2. This is the free body diagram of the cylinder. Okay. Now put some angles वगैरह solve करके try to get N1 N2 value. So free body diagram ड्रॉ किया तो downwards is W, this is N1, this is N2.
Whether all are there in the, all forces are there along the x and y axis, tell me. Along x direction, y direction नहीं है, ये दो नहीं है. We have to some angle find करके components निकाल के, then only equilibrium. The system is equilibrium means net force is 0. Okay, so then angles find करेंगे. Angles find करो, देखते हैं. Logic apply करके solve करो. Sir, won't the angle be 60? किधर? Either? Yeah. This angle, how much? Why 60? Sir, I took the triangle, sir. हाँ, yes. देखो, ये बीच में से आया वेट का, this 30, this 90, this will be how much? 90 plus 30 is how much? 120. Remaining will be 60. Similarly, AB 90 है, A 30 है, this is 60, right? So if I draw in like this, देखो, vertical and this line का बीच में, vertical line this line का बीच में 60 है, and AB 60 है. So you got 60, 60. समझ में आ रहा है? Pishanashwar, बोलो. So I got 2W. हाँ, N equal to W. 2W. 2W. N value, N1, N2. N1 is how much? N2 is how much? Sir, both are getting same. Same only will get. Yeah. Cut. Take 60, 60. Now take the components. N1 cos 60. N1 cos 60. That's sine 60. That's sine, right? कौन सा? एक component हम talking about. Yeah, isn't that Wherever cos? theta is, see, wherever theta is there, उस तरफ cos आएगा always. N1 cos 60. So इस टाइप theta है ना? So N2 cos 60. And इसका component will be N1 sin 60. And ये वाला N2 sin 60. After resolving the components, इसका कुछ value नहीं है. Now if we equate this side equal this side, equilibrium है ना? So क्या होगा? Sin 60 cancel. N1 equal to N2 you will get. Horizontal equilibrium लगाए तो, that means horizontal equilibrium means we are applying this one. Sigma fx is 0. N1 equal to N2. Right? Okay. Now vertical components लगाए तो, so N1 N2 equal to N I can take, N only I can take. That means what is becoming? N cos 60 plus N cos 60. 2N cos 60 is equal to W. So cos 60 is nothing but 1 by 2. 2 to cancel. N is equal to W. So N1 is W. N2 is also W. समझ में आ रहा है? Yes, वो थोड़ा डायरेक्टली देखकर आपको स्प्लिट करो बोले तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं. थोड़ा एंगल्स लगाने का, मैथ्स अप्लाई करने का, एंड देन ओनली वी हैव टू गेट द कंपोनेंट्स. ओके, चलो नो करो, देखते हैं. विदाउट कॉपिंग करो. A 50 kg homogeneous smooth sphere rests on a 30 degrees inclined plane A. इसे inclined plane है, उसका नाम है A. It is rest है. And bears against a smooth vertical point B. इधर touch हो रहा है, wall में touch हो रहा है sphere. The contact force at point B is, इधर contact force मतलब normal action at that point B we have to find. Find करो. ड्रॉ करके फ्री बॉडी डायग्राम करके सॉल्व करके बोलो. So if I draw the free body diagram for a smooth sphere का point mass, इसके ऊपर what are the forces? Downward force क्या होगा? 50 kg, right? So 50 g, right? 50 g is 500. And downwards. Okay, इधर क्या क्या forces ले लेंगे? देखो So ये the dot you drew is for A or for B? N1. हाँ? The dot Sphere, which you just sphere. A F B नहीं है. Sphere का. We have to draw the free body diagram for sphere. Sphere को we should take as point mass. So this is N1 and this is N2, right? So I want to find contact force N2 indirectly. Okay. And is force downwards is, center set downwards is mg, right? 500 newtons. So that's only we are drawing here. So this is N1.
and this is N2. Okay, now try. Now आपको N1 N2 फाइंड करो, मतलब N2 फाइंड करो, हो जाएगा. B का N2 लिया ना, N2 फाइंड करो. So the options. ऑप्शन नहीं, आगे आंसर. Will the N1 angle be 30 degrees? N1 angle is 30 degrees. Why? Given in the question. What? This inclined angle is 30 है given. इधर तो एंगल है, या ये वाला कैसा आएगा? No, sir, not N1, sorry. Sir, I'm getting 1000 by root 3. 1000 by root 3. N1 ना? And B. Okay. वही एंगल कितना कैसा है? टेल में. Sir, we're supposed to find N2, no? हाँ, N2 फाइंड करेंगे. N2 फाइंड करो. Sir, I took it as, sir, if you draw extend N1, then you'll get 60. Like it, N1 is perpendicular to this surface. So then you'd extend it and then you'd, ऐसा पीछे एक्शन करो. yeah, हाँ. extend it. Oh, that also And becomes then you'll 90. get 60 there and then alternate in area angle. So N2, so that will be 60. And then above A, so from A to N2, the Magellan angle will be 60. This angle And is 60. So sine, no. हाँ. So that's 90. हाँ, ठीक है, बोलो. आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ. हाँ. So 90. the other Then one is 60, sir. okay. In that triangle only, sir. In the triangle, ये वाला, right? No, ये sir. वाला. Yeah. So that is is 60. okay. Because the lines are parallel, because B is straight. And then, Okay. and देखो. then sine 60. Okay. See, these all things okay. ठीक है, अच्छा है. Got to answer is right only. देखो, वो सब लगा के से अच्छा. आपको क्या लिया मैं इधर? N1 ऐसे लिया ना? N2 ऐसे लिया ना? And there mg, right? So मुझे क्या चाहिए? आपको एंगल चाहिए ना? देखो, इंक्लाइन प्लेन का ऐसा इंक्लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, राइट? सो मैं क्या किया इधर, मैं दिस इंक्लाइन प्लेन. देखो, मैं ये इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा हिलाया, मतलब इधर तक लेके आया, राइट? इंक्लाइन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल समझ 30 खत्म. जस्ट आई मूव दिस इंक्लाइन प्लेन टू देयर. नाउ देखो 30, दिस इज 60. So you can shift the inclined plane like that. Yeah, मतलब एंगल आने के parallelly I'm shifting, right? Parallel shifting Yeah. and horizontally. Anywhere if you put this one horizontal and inclined plane, angle is same one, right? So what do you get? N2 sine 30 is equals to other side. So this is 30. Again, this is 60. And this is 30. Tell me. Now, n का इस तरफ component is n1 cos 60. ऊपर वाला n1 sin 60. Sine 30, yeah. मतलब नहीं 60 लगा तो 60 का रेस्पेक्ट में डालो ऑलवेज. ओके, सो क्या डालो? n1 sin cos 60. ऊपर क्या आएगा? n1 sin 60. So what we get? N1 sine 60 is equals to N2 sine 30. n1 Sorry, sin 60 N1 cos 60 equals to N2 cos 30. n2 cos 30. n2 का जरूरत नहीं है because it is in x direction, right? So can't we write N1 sine 60 is equals to 500? लिखो मरी, लिखो. Equilibrium means that one, right? Upward force equal to downward force. This side force equal to this side force. Equate करो and get the answer. So I got N1 as 1000 by root 3. Yes, correct. Here हम लोग n2 चाहिए ना? Sir, but Yes. N2 will be equal to 1000 5500 by root 3. Yes, correct. n2 is 500 by root 3. We'll get N1 as 1000 by root 3 and N2 as देखो, n1 sin 60 equal is to equal 500. to 500. Yeah. So root 3 by 2. So n1 is equal to 1000 by root 3. Yeah, I got, yeah. Now n2 क्या होगा? Simply n2 is equal to 1000 by root 3 times cos 60. Cos 60 is nothing but 1 by 2. So it is 500 by root 3, right? So n2 is 500 by root 3. So मेरा चलो ना करो.
ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड वन थिंग ना, लैमिस थ्योरम बोल के आपको आइडिया आने का। लैमिस थ्योरम पहले से भी डील किया ना, लैमिस थ्योरम डील किया। हाँ, लैमिस थ्योरम कब आई, कब यूज करने टेल में, When टेल में particles, यूज। Well, हाँ vectors. क्या, when particles are in equilibrium. equilibrium only, but all are equilibrium, right? No, all questions are equilibrium only. एक ही पार्टिकल में सपोज 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन पॉइंट में, ओके, एट दैट टाइम वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम। सो व्हाट इज द लैमिस थ्योरम सेज दैट सपोज मान लो इस पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स आर एक्टिंग, वन इज पी फोर्स, वन इज क्यू फोर्स, वन इज आर फोर्स। देखो इस फोर्स का अदर फोर्स के बीच में एंगल को अल्फा बोलता हूं। नाउ इफ आई आर फोर्स को छोड़ के रिमेनिंग अदर 2 फोर्सेस के बीच में को गामा बोला, एंड क्यू को छोड़ के रिमेनिंग अदर 2 फोर्सेस के बीच में आई कॉल एज बीटा, अल्फा बीटा गामा। ओके, देन लैमिस थ्योरम सेज दैट सिंपली whenever एक पॉइंट के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस वन, P by sin alpha, P Q and R are force, P by sin alpha is equal to Q by sin beta। देखो P by sin of which angle we have to use, sin of the opposite 2 forces के बीच का angle we should use is equal to Q फोर्स बाई उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट का 2 फोर्सेस के बीच में एंगल को बीटा बोलते हैं, उसको साइन बीटा। एंड सिमिलरली आर बाई उसका ऑपोजिट 2 फोर्सेस के बीच में एंगल को वी कॉल एज गामा। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज। ये वाला क्या है, इन बिटवीन में प्रॉब्लम्स विल बी मेक इजी इफ यू डोंट लैमिस थ्योरम। नॉर्मली इक्विलिब्रियम करके सॉल्व कर सकते हैं बट लेंदी हो जाएगा, ऐसा ऐसा आइडेंटिफाई किया तो इजी हो जाएगा आपको। एंगल कैसा लेने का समझ में है ना, जो फोर्स लगा रहे हैं अदर एग्जैक्टली ऑपोजिट में अदर 2 फोर्सेस का बीच का एंगल वी शुड टेक, अल्फा बीटा गामा। Pranav, on the video and see why you're laughing always. हाँ, copy it. करो। ये 300 न्यूटन से ये बंदा है, इसमें स्ट्रिंग का, इसका स्ट्रिंग से बंदा है। ये पूरा एक कोई भी वॉल होने दो, कुछ भी होने दो, सपोर्ट है। ओके, नाउ इज ट्राइंग टू फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। कैलकुलेट करो टेंशन इन स्ट्रिंग, उसका नाम दे दो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। देखो इसका टी बी, इसका टी ए टेंशन, इसका टी सी। He's trying to find tension in string. Sir, go to the washroom and come back. Yeah. Now calculate. देखो एक पॉइंट के ऊपर मल्टी 3 फोर्स आर एक्टिंग, टी बी, टी ए एंड टी सी। मुझे इज ट्राइंग टू फाइंड ये वाला। वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम हियर बिकॉज एक पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स आर एक्टिंग। ओके, नो बट एंगल चाहिए ना, सभी एंगल चाहिए, देन ओनली यू कैन एबल टू सॉल्व। देखो ये तो 90 दिख रहा है आपको, 90 इज 90। हाँ, नो क्या कैसे करेगा, ये कितना है इस एंगल समझ, 57. वही 57, ये वाला ये 37 है ना, 37. Yeah, 37. 37 degrees। Sir, Okay, T and this is by- 90। हाँ, Sir, for R by sin gamma. Sir, TC by sin. Okay, हाँ okay. टी सी बाई दिस एंगल चाहिए। दिस एंगल कैसा आएगा, आई कैन राइट लाइक दिस, total angle is 180, right? Total angle is 180, I can write like this, 180 minus 37। Hey, sir, again don't subtract here, don't subtract, 180 minus 37 right is also। now solve करो। now all angles you know, I think so, right? ये वाला 90 है, ये वाला 90 है। if you add 90 plus 37 again you cannot get the angle, don't add। calculate the so if I use the, if I now I know the angles everything, I use the Lami's theorem, TA by
आई डोंट नो उन दोनों का ऑपोजिट का एंगल्स कितना है 37 साइन plus 127. नहीं, वी शुड नॉट ऐड लाइक दिस 90 प्लस 7 बिकॉज 127 वैल्यू नहीं मालूम है ना, कॉम्प्लीट हो जाएगा, इज इक्वल टू 400 and 500. टीबी बाई ऑपोजिट वाला साइन 90 Sir, इज but इक्वल टू oh yeah, क्या क्या sir, nothing. I got confused. हाँ टीसी बाई इनका ऑपोजिट एंगल्स का कौन सा है साइन 180 माइनस 37 solve. Now equate any two. Three are equal means any two are equal. You can equate and try to find TA, TB, TC. You remember, right? Sin 180 minus theta. Which quadrant sin वो सब मालूम है ना? हाँ. Sir, So, कितना but है? won't बोलो. sir, in a circle, if the normals are passing through the center, then would it make a specific angle or like? No, not so any. but for if we equate TA by sin 90 plus 37 equal to TB by sin 90, you'll get TA by cos 37 is equals to TB. So you'll get 5 TA is equals to 4 TB. Okay, we could again this two. Relationship आएगा. Try to find TA, TB, TC कैसे भी करके. And you know TC is given how much? 300. खत्म use करो. समझ आया? So from this, if you get TB by, if ये दोनों equate किया तो TB by sin 1 is equal to 300 by sin 180 minus 37 is how much? Sin 37. 180 minus theta lies in which quadrant? Second. Second quadrant sin is positive, right? Positive. Then 180 360 trigonometric ratio will not change. So sin is sin only. Sin 37. Sin 37 is 4 by 5. 3 by 5. 37. Small angle, smaller side, right? 3 by 5. Use karo. And try to find TB and TC. You got a Tusha? TA, TB, TC? हाँ कितना? Sir, I got TBS 500, TS 400. 500. Yes, correct. So TB is equal to 300 by 3 by 5. So 1500 by 3 is 500. 500. Similarly, ये दोनों equal करो आ जाएगा. So I get 400. No, wait 1 second. 3 by 400 only. 400. Yeah. Yes, T is 400. है ना? Cos 37 will be 4 by 5, right? 4 by 5 use करके solve किया तो आ जाएगा, right? चलो, अनु करो. सब equilibrium questions के, then JEE questions करने वाला है. Then we have to go for dynamics of a particle. They finish constant motion. Sir, kind of. कैसे लगा constant motion? So like, they just did like 2 questions and then it turned out told it's over. See, constant motion करके don't take tension because उतना ज्यादा questions नहीं आएगा मेन इसमें. Just बोलने का करेंगे but ना उतना questions नहीं आने वाला है. इतना years में एक बार आया, एक दो, that's it. A man of mass m is hanging cabin of mass capital M. देखो cabin का mass है capital M, इसका person का mass है small m. ये क्या कर रहे हैं, वो पुल्ली में पकड़ के रख रहा, अगर ये छोड़ देगा ये नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, उसका लाइफ उसका हाथ में है अभी. ओके, इक्विलिब्रियम. ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैन एंड द कैबिन. कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एक्टिंग ऑन द मैन. ओके, फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो एक एक का, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग. फर्स्ट मैन का ड्रॉ करो. Effective gravity. हाँ, Shouldn't define effective gravity. नहीं कुछ इफेक्टिव ग्रेविटी कुछ नहीं है. Is telling to draw the forces on the man and the cabin. Man का draw करो. Man का point mass small m. And tell me what are the force acting on it. One is mg. And normal reaction. And here tension. इस पैर में
ये वायर नहीं है ना, बाजू में वायर है ना, हाँ, वायर में कितना टेंशन T, राइट. सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैन मींस, वन इज mg, ऊपर नॉर्मल एक्शन एंड, Sir, हाँ, आगे sir, आंसर. will you हाँ, tell. yeah, but then sit down. Sir, will you have N when you're taking the lift? Because like you'll consider the whole thing as one system. So do we हाँ, have to put N? किसका ये The एम भी man, ऐड करेगा. sir, first case we'll get man. Sir, wait. अरे Sir, the रुको, normal मैन force का of the इधर man तक will be डाउट हो N. गया. नहीं, मैन का हो गया, ए फोर्स आ गया. Huh. नो, कैबिन का बोलो, कैबिन के ऊपर व्हाट इज द The फोर्स एक्टिंग ऑन इट. cabin, will it be, will there एम be प्लस एम, normal or not? दोनों ऐड करना पड़ेगा. कैबिन के ऊपर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, टेल में. So you'll have tension, two tension, and टू टेंशन. you'll have capital M plus M into हाँ, G. या So do या you have to put normal नॉर्मल किसका नहीं, कुछ of नहीं, the नॉर्मल man? है. मैन का नॉर्मल लगा दिया ना, मैन का डन. So but मैन, on हाँ, ऑन टू द कैबिन टेलिंग, नॉर्मल एक्शन का. व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन, ड्रॉ करेंगे देखेंगे. कैबिन के ऊपर टेल में व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कैबिन के ऊपर. सो वन इज mg, m प्लस, सी ऑलरेडी सी, नॉर्मल अगेन फिर से नहीं लगाने का. वाई, ये नॉर्मल एक्शन इज इक्वल टू mg ऑन लेट. सो mg लगा रहे बोलते फिर से नॉर्मल एक्शन मत ड्रॉ करो, समझ में आ रहा है. हाँ. सो व्हाट आर द फोर्सेस कैबिन के ऊपर, ये कैपिटल एम का, कैपिटल एम कैबिन, ये मैन का. हाँ. सो इट इज m प्लस स्मॉल m इंटू g. इसके ऊपर व्हाट आर द फोर्सेस, एंड अदर वन इज ये टेंशन t, ये भी टेंशन t, राइट. सो इट इज 2t. These are the forces acting on it. Now calculate the force applied by the man to the rope. मतलब T फाइंड करो, T फाइंड करो. अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स करके T in terms of small m मास m में आएगा, कैपिटल m में आएगा. So can you move? Sir, capital M plus small m into G by 2. Yes. इसका इक्विलिब्रियम है ना, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स. So 2T is equal to capital M plus small m into G. Therefore T is equal to capital M plus small m into G by 2. टेंशन आ गया. Wait, sir. Oh, never mind, nothing. Okay. Now next one क्या है, normal reaction of the force acting on the man. Normal action find करो, n find So, करो. but on the cabin, won't the man's tension also act? So won't it be 3T? See, for ये the cabin? सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, होल से जा रहा है. सेम स्ट्रिंग मींस हाँ, सेम टेंशन. हाँ, Sir, mg minus T. mg माइनस t इज इक्वल टू n ना. mg t के जगह में लगाओ ये वाला Okay. सब्स्टिट्यूट. So minus capital mg by 2. स्मॉल m माइनस कैपिटल m g by 2. नो, रहेगा आपको रॉन्ग. देखो So, अपवर्ड sir, फोर्स. N plus T, small won't it be N plus mg. T is equals to mg? ओके, नॉर्मल एक्शन इज इक्वल टू mg माइनस t. सो t की जगह में लगाओ mg माइनस, ये माइनस शुड बी बोथ राइट. सो माइनस mg माइनस स्मॉल mg by 2, राइट. नहीं नहीं, ये इसका by 2, ये वाला इधर तक. हाँ. सो 2mg minus mg is mg. So n is equal to mg minus capital mg by 2. If I take common, g common, m minus capital M by 2 is answer. समझ आ रहा है? So technically, won't the mass of the cabin be more than mass of the man? So sir, then क्या होगा? So वो normal be negative no in this question then. Normal action negative हुआ. See, that's Yeah, why because- small. Sir, that is. sir, how can the mass of the man be bigger than the elevator? So elevator will fall down. See, उतना लॉजिक मतलब वैल्यूज आर नॉट गिवन राइट. वो काट का डब्बा हो सकते हैं, पता नहीं ना. एनीथिंग इट कैन बी. सो वी विल सी दैट. नंबर्स दिया तो वी कैन नो, राइट. चलो, हाँ, ये करो. जेईई मेंस क्वेश्चन स्टार्ट करो, देखते हैं. जेईई मेंस क्वेश्चन ना करो. आई विल गिव ऑप्शंस, टेल आंसर.
2023 में आया. नो करो. Sir, I'll give a fluke, sir, first. नहीं, I'll not give options. Go. Always you tell. Try. It's always Sir, guessing. 800 root 2, sir, because you wrote that See, option. नहीं, wrong. बेटर से करो, अच्छे से प्रॉपर करो. $70 kg garden roller is pushed with a force 200 newtons. ये 200 न्यूटन से पुश कर रहा हूं. देखा होगा ना गार्डन वाला व्हील का. ओके, एट एन एंगल 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल से पुश कर रहा है. ओके, द नॉर्मल एक्शन ऑन द रोलर इज, नॉर्मल एक्शन समझ. नॉर्मल एक्शन किधर एक्ट होगा? इधर है ना, इधर से. ये नॉर्मल एक्शन ही समझ. So always कभी भी 600. horizontal. Tell me. So I got the answer as 600. No, wrong. Sir, I'm getting 800. Sir, 800. So won't be, so first you have to do the vertical, that's 200 sine 30, you'll get 100. And then you have to add that to 7, you have to add that to weight of mg, like mg, right? देखो, इसको मैं elongate कर दूंगा 200 newtons. This angle is 30 Sir, degree. mine is 800. 800 is answer. Perfect. 23 में आया. ओके, इसका कंपोनेंट्स निकालो. 200 cos 30 and ये वाला 200 sin 30. Now since it is equilibrium, upward force equal to downward force, this side force equal to this side force, right? But ठीक है. Now क्या करेगा? Tell me. Now one more force acting, one is mg, right? mg. मास कितना दिया? कुछ दिया मास का 70 दिया ना. हाँ, नो इक्वेट कितना है प्रणव? आंसर इक्वेट करो. नो. Sir, I got 800. Sir, I took the direction wrong. Okay, direction. So since upward force to downward force, right? So n is equal to mg plus 200 sin 30. Sin 30 is 1/2, right? So 700 plus 100. So it is 800. Good. देखते हैं. नेक्स्ट करो. एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं ऐसे मॉडल्स में, ये वाला. ट्राई टू सॉल्व. 2024. Oh, nice. Sir, theta is between T1 and y-axis. This is 45 degrees. So can I give options for this, please, sir? I won't give fluke. You're guessing always. That's why. No, sir, I'll solve. Okay. One kg mass is suspended from a ceiling of a rope of length 4 meters. Sir, in this question, Oh. will cos 45 be towards a y-axis? Which cos 45? T1, huh? T1. Y-axis. Where theta is there? Sir, Oh, sir, okay. Sir. Between the like, I got the relation between T1 and T2, and I got T1 value. But for force, it'll be T1. When we use the sine component, will it be x-axis? F is equal to that component. Then I got 10. देखते हैं. Tisha will tell correct. बोलो. Sir, I got 10 by root 2. 10 minutes. Okay. One more option. Sir, what will you even do with 4 meters, sir? नहीं, वो ऐसा देगा वांटेडली. सभी यूज करने का बोलता नहीं रहेगा. Always try to use what are the things.
फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो फॉर दिस पॉइंट मास में एंड सॉल्व. Asking what is the magnitude of F चाहिए. So this is T1 AF है. You'll get T2 as 10, and हाँ then देखो ये T2 A वाला is mg right 1g is yeah, nothing so but 10 right. So yeah, T2 is 10. So T2 yeah, so T2 is 10. T1 cos 45 is 10. So you'll get T1 as 10 by root 2. No, not 10 by root 2. 10 root 2. And then we have to answer is use right. 10 root 2 sin 45. Your You answer get is right. Okay. रुको Sir, let them do. कितना आ रहा है पीछा 20. 20 नहीं है ना ऑप्शन. डाल फिफ्थ ऑप्शन डाल दो 20 बोल के. ओके now देखो इसका कंपोनेंट निकालो. T1 cos 45 Sir, and got इधर कंपोनेंट got it. T1 sin 45. Okay, so upward force, downward force. So T1 by root 2 cos 45 1 by root 2 is equal to 10. So T1 is 10 root 2, right? Now substitute करो इसमें. This side force equal to this side force, right? Equilibrium है ना, equilibrium में always this side force. That's why sigma fx is 0 at all, right? So F is equal to T1 की जगह में 10 root 2 into sin 45 1 by root 2. 10 is answer पक्का. sir, Okay. for next class also more FBD only. हाँ वीडियो में करने वाला है. ओके थोड़ा करेंगे अभी. क्यों और 9:40 में बार बार खत्म कर रहा है. करेंगे एनर्जी है. हाँ चलो हाँ चलो. सेम मॉडल बट आंसर बोलो. So there's no diagram. नो डायग्राम. ऑलवेज डायग्राम देगा. Same model only, but they given in 2019. These topics are not free body diagram. ये हो गया free body diagram. Equilibrium particles we are doing. Next dynamics देखना पड़ेगा. न्यूटन Sir, सेकंड लॉ यूज करके. हाँ sir, horizontal force is हम्म applied on the rope means how will it deviate? देखो a mass of क्या बोला. mass of 10 kg is suspended vertically from the rope. ऐसा mass है. Initially ऐसा है. Okay, from the rope. When the horizontal force is applied on the rope, at some point the rope deviated at 45 degrees. So इधर से at a certain point में मैं ऐसा push किया. So, So क्या will होगा. the 45 degrees be with respect to x-axis or with respect to the point? Y-axis, vertical, right? He told. So the Okay. force is I'm applying like this. इसके ऊपर लगा है force. इसके ऊपर लगाने से क्या होगा. ये धीरे धीरे ऊपर तक आया. ये 45 degrees. Okay. After on the rope deviated at angle 45 degrees at the roof top point. If the suspended mass is at equilibrium, no करते 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 ये mass is at equilibrium. The magnitude of force F is. He's asking magnitude of F. So over here, won't T cos 45 be 100? पूरा सा करो. I will not help. करो. Sir, 100. हाँ Sir, 100 Newton. देखेंगे. Yeah, 100. हाँ Same. 100. Same as हाँ last question. यस आया. प्रणव आपको भी सेम. आपको किधर क्या करेंगे. इधर mg इधर So you get टेंशन T. same. तो ये वाला 45 डिग्रीज. सो कंपोनेंट निकाल के सॉल्व करने का विल गेट द आंसर. ओके करो. ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस. A block of mass 200 grams is kept stationary on the smooth inclined plane by applying a minimum horizontal force F. में ऐसा अप्लाई करके इक्विलिब्रियम बनाया. The value of x is how much.
इस ब्लॉक के एम का ड्रॉ करना आता है आपको? Yes, sir. यस, ऑलरेडी टोल्ड राइट, इंक्लाइन प्लेन का कैसे ड्रॉ करने का, एमजी वी शुड नॉट ड्रॉ, राइट? So can you give options, please? अरे न्यूमेरिकल बेस्ड है, नो So ऑप्शन। whether should we convert grams into kilograms? No, हाँ, no. कन्वर्ट करने का। अरे. Sir, I have one doubt. Sir, in this चलो, question, will the mg act backwards? इंक्लाइन प्लेन में व्हाट आई टोल्ड, कभी भी mg नीचे नहीं आएगा ना, mg splits into two components, one is along the inclined plane and one is vertically, this is vertically, this is x axis, right? हाँ, एक ये कितना होगा इस तरफ वाला, mg sin theta, theta is the inclined angle, Oh, yeah. and this wala mg Cos theta. cos theta, and here क्या क्या force acting on it, normal action, and the force F is like So this, I got 300. x, huh? Yeah. No, wrong. F find करो, see this is x axis, we know this is x axis, Sir, and can this we is take vectors and say mg cos theta as resultant? नहीं, कुछ नहीं, mg cos से क्या रिजल्टेंट है, नहीं, 2022, I'm not getting. easy only, figure diagram ड्रा करके फाइंड करो, x फाइंड If I, करो, sir, if I use this angle sir, is how much, I use after I get the components, what do I do? Only I'm not understanding. अरे इसका फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, this is x axis, right? This is x axis, this is y axis, Sir, I'm okay, getting root 3/2. root 3/2, Yeah. no wrong, देखो एंगल देखो, इधर 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 फोर्स क्या है टेल में, पूरा ये बराबर कर रहा है, हाँ टेल में एंगल क्या होगा, टेल में ये एंगल कितना होगा, 60. 60, नो अप्लाई करो, व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन इट, करो एंड सॉल्व, ट्राई करो, ये जेई में कुछ नहीं है ना, डोंट गिव अप, ट्राई, ओनली आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके सिंपली सब्स्टिट्यूट, ड्रॉ करो, सी एफ का कंपोनेंट निकाल दो, एफ का सी अलोंग एक्स एंड वाई में स्प्लिट करने का, राइट, विच आर देयर इन एक्स एंड वाई, देखो वाई में तो ये दो फोर्स है, इसको स्प्लिट नहीं करने का, एक्स में ये वाला है, इसको भी स्प्लिट नहीं करने का, ओनली एफ को स्प्लिट करने का, दिस एंगल इज आपको 60 डिग्री आया ना, तो टेल मी व्हाट इज द कंपोनेंट हियर अलोंग द एक्स डायरेक्शन में, एफ cos 60 एंड अलोंग द वाई डायरेक्शन में एफ sin 60, नाउ इक्वेट दिस साइड फोर्स इक्वल दिस साइड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, इक्वेट करो, यू गेट द आंसर, tell me f cos 60 is equal to upward this side force equal to this side force mg sin 60, right, theta is 60, right, हाँ, now एक आया, next second one relation, tell me second one, n is equal to mg cos theta cos 60 plus f sin 60, our intention is to find the value of f, हाँ इक्वेट करो, सॉल्व, So 2 root. 2, नो, ठीक है, ये दोनों इक्वेट किया तो कितना है, टेल में f is equal to, Sir, one doubt. हाँ टेल में, Sir, did we convert that into kgs or not?
हाँ कन्वर्ट करने का कंपल्सरी। देखो Oh, wait, इसकी find the value of x. Sir, हाँ x is x1 12. हाँ my x is 12 that is only Sir, I was telling force. इधर x दिख रहा है ना। ओके f into 1/2 is equal to ये कितना होगा m is 0.2 right 0.2 into 10 into root 3/2 so 2 to cancel so Get f plus 2. 2 root 3 right ये 2 को अंदर भेजो 4 into 3 2 12 so 12 newtons if you compare x is nothing but 12 Oh. So the second reaction is not even required. no just the not first one. required not required if they ask normal action वगैरह पूछे तो you can substitute but no not required okay Got it, sir. so next class में we are doing the dynamics of particles का dynamics हो गया ना Yes, sir. no chapter हो गया